Hello guys, a very good morning and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and your gym life is spot on. Well, आज मेरा प्लान था जिम जाने को अभी इट्स अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग बट मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया. आई हैव टू मूव देयर फॉर सम टाइम बिफोर द नून एंड देन उसके बाद मैं नून में आज जिम लगाने वाला हूँ. इसीलिए मेरा जो फर्स्ट मील है वो मैं अभी ले रहा हूँ. इट्स सिंपल ओट्स, peanut butter, and I have added some raisins. By the way, I have stopped taking that chocolate oats क्योंकि उसको खाने के बाद मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था. मेरा जो नॉर्मल ओट्स है, पीनट बटर है और रेजिन्स है, जो भी मेरा नॉर्मल रेसिपी है उससे ही काम मेरा चल रहा है. एंड ऑल्दो द चॉकलेट पीनट बटर इज़ वे टू प्राइसी than it actually should be, it wasn't worth it. So I'm just sticking to whatever I used to have before because that gave me results. So I am planning to stick on it. That's it. And Sumit, bro, if you're watching this video, I'll make sure that the next day we hit gym, we hit the back regime of mine प्रॉपरली. आज मेरा थोड़ा काम आ गया है इसीलिए आई कैन नॉट गो इन जिम एंड आई एम रियली सॉरी दैट यू वेटेड फॉर मी फॉर सो लॉन्ग इन द जिम बट आई वॉज नॉट एबल टू शो अप. और मुझे बैक में अपने जो एक्सरसाइजेस है बिल्कुल भी उसको चेंजेस करने का मन नहीं है, लेकिन आई मेक स्मॉल चेंजेस विच आर वेरी ऑप्टिमल. लाइक आई चेंज द ग्रिप ऑफ माई वर्कआउट in my compound movements. The basic compound movements that I have been doing from a long time is bend over barbell rowings, which has helped me to make my back thicker and wider, very honestly. और इसका ग्रिप मैं बस चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे लोअर बैक पे थोड़ी सी एंगेजमेंट ज़्यादा रहे. और रही बात अपने जो वर्टिकल पुल की, उस पे मैंने थोड़ा सा चेंज करना है. आज मुझे वाइड ग्रिप पे अपना जो वर्टिकल पुल है वो कंप्लीट करना है. एंड बाय द वे, अगर आपको कोई बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, इट्स नथिंग बट द रेन हैज स्टार्टेड. द मॉनसून हैज़ ऑलरेडी अप्रोच्ड इन वेस्ट बंगाल. थैंक्स टू गॉड कि इतनी गर्मी अभी नहीं रहेगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से you get easily exhausted, you feel sluggish all the time क्योंकि ह्यूमिड भी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर गर्मी में. आई लव रेनी सीजन एज बिकॉज आई लाइक द साउंड ऑफ द रेन. लाइक जब भी बारिश गिरती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक अजीब सी साउंड आती है, तो दैट गिव्स मी अ गुड वाइब. अलॉन्ग विद दैट जो फ्रेश मड की स्मेल होती है आफ्टर द रेन हैज स्टॉप्ड फॉलिंग, दैट गिव्स मी प्योर वाइब ऑफ नेचर. So I just love the fact when it rains, but only when I'm inside my house, not outside, because I really don't like to get wet in rain. And by the way, अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है ना, तो वो एक बारिश की है और सेकंड मेरे नेबर में काम चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शंस की, तो उसी की वजह से. I'm not ready yet, ready to forget now. I'm not ready yet, ready to forget. वेल फाइनली लैंडेड इन द जिम एंड आज मैं बैक करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने सुबह ही बोला.
और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने फेवरेट chin-ups से. And today I'm wearing this wrist straps as because I want that extra 2 to 3 reps after my failure of set. That's why I'm just using these straps, and it has been helping me since a very long time. Also, there's a story behind it. It's my favorite wrap as because this is the oldest wrap that I got. Like जब से मैंने gym चालू किया है तब से ये wraps मेरे पास है, and it's very lucky for me. So let's see how many reps I can do it. By the way, this is my third set. Come on, you got 2 more. To be honest, I didn't count the reps, but each and every repetition simulated my muscle the way I wanted. So it's a good set. Well, after this, I'm going to quickly move to my second exercise, the compound movement, that is barbell rowings. और आज मैं supinated grip में करने वाला हूँ. So this is going to be my final set of barbell rowing और मैं supinated grip से कर रहा हूँ जैसे कि मैंने बोला है, and this grip is literally helping me to activate my lower back. That's the sole reason of hitting it in a supinated grip. Anyway, let's just check the pump cover once, and let's hit into the reps. Not bad so far, but I think it could be better if I hit one more set of this exercise. Let's get into it. I'm sorry about the background sounds. I have not played it. I don't like stupid songs in gym. I'll mute this, okay? And put my audio. Easy. Not bad. Not bad. Let's move to the next exercise. Lat pull downs, and I'm going to use a wide grip today as told in the morning. So this is going to be my last set of wide grip pull downs. Before that I actually needed some spot. Last वाले set पे भी मैंने spot लिया है, and Pritam helped me. In this set also he's going to give me some support as because I'm already feeling very drowsy and my muscles are like very tired right now. So I need a support for that reason only. Pritam, let's go. Good reps, huh? Slow, control power movement. 3. Slow. 4. 5. Short. 6. Slow. Short. One more.
I'll just do drop set, bro. No partials. Slow. 1. Hold. 2. Hold. Chal. Let's go. 4. Chal. 5. 6. Chal. Come on. 7. Go. Chal. Last one. 8. Hold. Slow and come. Slow. Full stretch. I'm not able to move my forearm. Like, my forearms got pumped. Too bad. But I can tell honestly कि last वाला set इससे बेहतर हुआ था. पता नहीं, probably due to the deficiency of strength that I'm facing while doing this exercise. But yeah, it is a good exercise. और इसके बाद मेरा last exercise होगा, वो है machine में rowings, and then I'll be done. Oh. Well, this is going to be my second set of machine pulls and the second last exercise of my back regime today. इसके बाद मैं pull downs करूँगा और then मेरा exercise ख़त्म होगा. लेकिन आज मैंने इस workout को choose क्यों किया है, क्योंकि इसको मैंने बहुत दिन हो गया अभी किया नहीं. And this machine gives me one of the best stimulation in my back. And also the plates, as you can see, it's 3 plates on each side, 3 plates of 25 kgs on each side. लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ परफॉर्म करते हैं. But what I do is I do it with an alternative. Like first I take my right hand and then my left hand. ऐसे क्या होता है, मेरा जो concentration रहता है muscles के ऊपर वो काफ़ी अच्छा होता है and it stays for a long time during my set. That is the reason I perform alternatively, not with both hands. And if you're a beginner, you can try this alternative method. It's a very good exercise for your back. Trust me on this. Anyway, let's get into it. Sorry about the background music. I'm just gonna mute it as usual. Otherwise, copyright gonna kick my ass. The stretch that I get during this exercise is unimaginable. As also you can see that I've kept a gap in between my chest and this machine so that I can get the maximum benefit from this machine and also the maximum stretch. Well, as you saw that I might went little out of the form as because I'm just trying to keep the stimulation on till the end of my exercise. That is the reason out of form I'm going. But you know, if you're a beginner, just stick to the form and do this exercise. Since I can hold the mind muscle connection till the last, that's why मैंने थोड़ा सा out of form. So this is going to be my last set of the lats and ये exercise मैं ज़रूर रखता हूँ अपने back regime पे क्योंकि this gives me a very good contraction in my muscles and the part where I exactly required. और इसको करने के बाद मुझे face pulls करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें rear deltoids already activated रहता है. That's why. Anyway, let's get into it.
Well, now I'm totally done with my exercise. अभी घर जाऊंगा, घर जाके मेरा लंच कंप्लीट करूंगा और लंच में आज भी चिकन एंड राइस है. And since I'm showing all of my meals that I'm taking during my cut, so I'm going to show what I actually eat. And sorry अगर ये सब आया तो ये just changing room है and I cannot go to that room and show my back today as because वहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ हैं and it's offensive if I open my t-shirt in front of them, and this is the rule of the gym as well and I should abide that. Well, my deltoids and traps have grown very nice so far. Just only the lower region of my chest needs to be, bit modified. अगर वो चीज़ सही हो गया ना एक बार, तो मेरा बॉडी पक्का बहुत अच्छा दिखेगा और अच्छा लगेगा भी. Anyway, well, you exactly know that you have done your back workout correctly जब आपका फोर आर्म्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा. लाइक व्हेन आई एम ट्राइंग टू ईट दिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़ोर से मेरा फोर आर्म्स को खींच रहा है अंदर से. लाइक द मसल्स आर सो टायर्ड राइट नाउ. ऐसा अगर आप लोगों को होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड ट्रस्ट मी, इनिशियली आई हेट दिस फीलिंग, बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा फोर आर्म्स अगर ग्रो करेगा तो इसके वजह से ही ग्रो करेगा. सो आई थिंक दैट दिस पेन इज़ ग्रेट फॉर मी अगर इससे मेरा फोर आर्म्स ग्रो होता है. वैसे काफ़ी छोटी है मेरी फोर आर्म्स क्योंकि आई डोंट नो द रीज़न, बट या somehow it is getting bigger. Ouch, I cannot even flex. Anyway, let me have my meal. It's simple meal again, 250 grams of chicken, 150 grams of rice और एक home cooked fish जो कि मेरा regular है. And this meal is very tasty and इसका टेस्ट अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. That's why your meal tastes 10 times better if you are hungry. And although it is tasty because I have cooked it, of course, before going to the shower, मैंने अच्छी तरह से कुक करके इसको एक कैसरोल में डाल दिया ताकि ये गर्म रहे. बट इट्स नॉट दैट हॉट राइट नाउ, बट स्टिल मैनेजिंग टू इट. और इस मील को ख़त्म करने के बाद मेरे पास बस और एक ही मील रहेगा जो कि मैं 4 होल एग्स लेने वाला हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू माई मूड आई विल जस्ट मेक द एग्स. प्रोबेबली आई एम गोना गो फॉर स्क्रैम्बल एग्स टुडे बिकॉज बहुत दिनों से मैंने स्क्रैम्बल एग्स खाया नहीं. और ये जो मैं चिकन और राइस की रेसिपी बनाता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है. और टेस्टी होने के साथ साथ इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है. लाइक आई डोंट पुट एनी स्टफ्स दैट विल मेक यू फील ब्लोटेड. और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं रहते हैं जिसको खा के आपको एसिडिटी या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आए या फिर बैड बर्ब्स आए. आई make sure that I take my meals very seriously on every day because this is the only source of protein that I get to eat. अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. I'll make sure to make a recipe video of this chicken and rice which is without any oil and it's very healthy and इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. So just let me know in the comment box. So this is going to be my last meal and the final meal of the day जो कि है 4 eggs, nothing else. और इसको फ्राई करने के लिए मैं बस थोड़ी सी बटर लेने वाला हूँ यहाँ से. And the amount of butter would be really shit, it is so hard, yeah, really minimal. Like the amount I need to grease the pan, that's it. Like ittu sa butter. Yeah, the pan is well greased right now. और आराम से जो 4 eggs है ये बन जाएगा इसमें. The greasing is important. Yep. I'm gonna have the scrambled eggs, my favorite. Scrambled eggs are my favorite after half boils. And half boils are my recent favorite now. और उसको बनाने में ना like एक टाइमिंग की ज़रूरत होती है और उतना टाइमिंग मेरे से नहीं हो पाता है. Just gonna crack these 4 eggs quickly.
you shouldn't leave any amount of protein in the eggs. Hopefully the color is visible. Actually I use the pink Himalayan salt over any normal salt as because it's healthy. तो बड़ा वाला डब्बा था, इससे मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र करके रखा है ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो. So just gonna sprinkle some salt. And tada! It looks yummy. It is somehow looking like this. I don't know the shape. It's pretty awkward but the taste is amazing. और ये मेरा मानना है कि अगर आप कुछ भी बना के खाते हो अपने लिए तो वो शरीर पे ज़्यादा अच्छे से लगता है. Like it is my sole belief. You guys can like abide by it or not, totally up to you. By the way, this is going to be the end of the day and end of this vlog. और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी मेरा शोल्डर वर्कआउट लेके, क्योंकि कल मुझे शोल्डर करना है. एंड शोल्डर डे आर वन ऑफ माई फेवरेट डे, क्योंकि मेरा मिड डेल्टॉइड को बढ़ाने का अभी जो फोकस है और माइंडसेट है along with the red deltoids is on next level. So cheers guys and have a good one.